हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेस बायोलॉजी क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था अबाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज हाउ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टुगेदर in angiosperms or the flowering plants. Now today we'll be discussing basically about the events that occur after fertilization. So post fertilization events we'll be discussing today. Now post fertilization events basically refer to all the different events that take place after the fusion of the male and female gamete. ठीक है, तो हमने देखा था कि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, एक सिंगल मेल गैमेट फ्यूज करता है एग सेल के साथ टू फॉर्म जाइगोट, और दूसरा मेल न्यूक्लियाई या फिर मेल गैमेट फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ इन ए प्रोसेस ऑफ ट्रिपल फ्यूजन टू फॉर्म द एंडोस्पर्म. Now, what are the steps or events that take place during the post fertilization? Basically, चार steps होते हैं. पहला step होता है development of endosperm from PEC, primary endosperm cell. Primary endosperm cell is produced by a triple fusion. Second होता है development of embryo from zygote. Zygote multiple division करता है, mitotic division करता है, उससे embryo formation होता है. The third one is development of seed from ovule. Okay, तो हम लोग जानते हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल जो होता है वो सीड में डेवलप करता है और ओवेरी जो होता है वो फ्रूट में डेवलप करता है. तो वो फाइनल स्टेज इज द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम द ओवेरी. सो लेट अस डिस्कस दिस वन बाय वन, एक एक करके डिस्कस करते हैं. And we'll begin with the endospermic development. So primary endosperm cell, that is PEC, formed as a result of triple fusion, undergoes repetitive mitotic division, and triploid endosperm tissue is formed. The main purpose of endosperm is to provide nutrition. तो इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. नाउ यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान में रखो स्टूडेंट्स कि जाइगोट से एम्ब्रियो होने से पहले एंडोस्पर्म डेवलप करता है. दैट मीन्स द एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट प्रीसीड्स द embryonic development or the zygote developing into the embryo. तो पहले आपका एंडोस्पर्म डेवलप करेगा क्योंकि वही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा आपके डेवलपिंग एम्ब्रियो को. ना ये जो एंडोस्पर्म होता है वो दो टाइप का हो सकता है. इट कैन बी फ्री न्यूक्लियर और सेल्यूलर. मतलब फ्री न्यूक्लियर मतलब इट विल बी हैविंग ए सेम साइटोप्लाज्म बट मल्टीपल न्यूक्लियस विल बी देयर, जबकि सेल्यूलर मतलब इट विल बी मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल्स. ठीक है, तो इनिशियली जो फॉर्म होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, उसका न्यूक्लियर डिवीजन कंटिन्यू करता है एंड इट विल हैव मल्टीपल न्यूक्लियस. सो द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज मोस्ट कॉमन type of endosperm development. The best example is that of tender coconut. Now if you might have observed a coconut, तो आप देखोगे उसका जो कोकोनट वाटर होता है that is free nuclear endosperm. तो वहां पे आप देखोगे कि कोई सेल्यूलर कंपोनेंट्स नहीं होते हैं, बेसिकली वो एक लिक्विड होता है, साइटोप्लाज्मिक लिक्विड होता है और उसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, तो मल्टीपल न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है. Now that free nuclear stage slowly develops into the cellular stage in case of coconut. तो टेंडर कोकोनट या फिर जब कोकोनट यंग होता है, जब उसमें कोकोनट वाटर होता है, that coconut water is basically free nuclear endosperm. Now, in case of tender coconut, the water present inside is the free nuclear endosperm, which I have been telling you. Now, if you look at this cross section of a coconut, you'll find there is an outer layer called as exocarp. तो ये जो outer layer होता है ये fruit कहलाता है. This is basically the fruit from here till this point. The middle layer, which is mushy, which is having fibers, that is the mesocarp, and the inner one called as endocarp, the hard outer covering, brown color covering, जिसको आप लोग ब्रेक करते हो, यू ब्रेक इट आउट टू गेट इनटू द वाटर और द एंडोस्पर्म प्रेजेंट इनसाइड. सो ये तीनों लेयर मिला के फ्रूट बनता है. दिस इज द एंडोकार्प. नाउ इनसाइड द एंडोकार्प ये जो व्हाइट कलर का आप लोग एक लेयर देखते हो व्हिच बेसिकली इज एडिबल, जो हम लोग खाते हैं, दैट इज द एंडोस्पर्म. ठीक है, उसके अंदर जो लिक्विड रहता था वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, लेकिन धीरे धीरे करके ये जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या फिर ये जो लिक्विड होता है, it will start developing cell wall. Gradually cell wall develops enclosing the several nuclei and forming a cellular endosperm. तो उससे एक cellular endosperm form होता है. These cells and nuclei start settling at periphery and the layers of the cellular endosperm starts appearing. तो ये जो सेल फॉर्म होंगे धीरे धीरे करके पेरिफेरल सरफेस में ये सेटल डाउन होंगे. दिल सेटल डाउन इन द पेरिफेरल सरफेस, एक एक करके वो लेयर वाइज जमा होने लगेंगे और उसी से आपका सेल्यूलर एंडोस्पर्म फॉर्म होता है इन केस ऑफ कोकोनट. Therefore, in a completely mature coconut,
water turns milky surrounded by cellular part carnel. It does not contain free nucleus. जो outer layer होता है, जो white color का layer होता है carnel, उसमें आपका free nucleus नहीं होता. So that is a mature coconut that we are talking of. Now, after the endosperm has developed, the second stage is the embryonic development. Embryo का कैसे develop होता है? तो ये वाला diagram हमने previously discuss किया था. I'll explain this diagram first, then we will go into the descriptional part. तो जब fertilization होता है, after that this egg cell will fertilize with the male gamete forming a zygote which is diploid, और central cell fuse करेगा एक male gamete के साथ forming primary endosperm cell PEC having the primary endosperm nucleus PEN. अंदर का जो न्यूक्लियस होता है ये ट्रिप्लॉइड होता है having 3N क्रोमोसोम नंबर. ठीक है, याद रखो ये चीज, ये ट्रिप्लॉइड होता है और ये जो सेल बनता है that cell is now called as primary endosperm cell. Now what we will do, we'll basically highlight on the zygote now. आप एंडोस्पर्म का तो डेवलपमेंट देख चुके हैं, तो इसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे. वी आर नॉट गोइंग इनटू दिस एंडोस्पर्म, विल जस्ट एलिमिनेट दिस. वी विल फोकस एट दिस पॉइंट. आप ये चीज जो यहाँ पे जाइगोट देख रहे हो उसको यहाँ पे मैग्नीफाई किया गया है. Now that has been magnified here. So this is basically the zygote. Now the zygote will undergo mitotic division, repetitive mitotic division. तो एक सेल से दो सेल बनेगा, दो से चार, चार से आठ, वैसे करके डिवाइड करेगा. Initially it will form a globular embryo. Now globular embryo will have a mass of cells present at the bottom or towards the basal side, connected through a suspensor cell to another you can say nutritive cell present on the apex. ठीक है, तो बेसल साइड में आपका ग्लोबुलर एम्ब्रियो रहेगा, एपेक्स साइड में आपका न्यूट्रिटिव सेल रहेगा. सस्पेंसर सेल और न्यूट्रिटिव सेल धीरे धीरे डीजेनरेट कर जाते हैं विथ टाइम. नाउ इन केस ऑफ डाइकोटिलिडनस प्लांट्स, अगर आप लोग डाइकोट प्लांट्स में देख रहे हो, तो ये जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है ये धीरे धीरे करके बाइफर्केट करेगा लाइक दिस. इट विल स्लोली बाइफर्केट forming a heart shaped embryo. Now this heart shaped embryo is necessary because ये जो दो bifurcations हो रहे हैं, each of them will develop into a cotyledon. Slowly this suspensor cells will degenerate. धीरे धीरे करके ये degenerate कर जाएंगे and they will develop into a mature embryo. Now this mature embryo, as you can see, the two different flap like structures which develop, now they form the cotyledons. Because dicot plants में दो cotyledon होते हैं, तो dicotyledonous में आपको ये दो cotyledons देखने को मिलेंगे. बीच में इसका embryonic axis रहेगा. This part will be the embryonic axis, where the radicle will remain towards the apical part and the plumule will remain towards the base part. तो ये नीचे का जो segment है embryonic axis का, this point will develop into the plumule, which later on develops into the shoot tip or the shoot part. Whereas the apex part, this segment will develop into the radicle. This develops into the root or the root system after the germination takes place. So this is how the developmental stages take place in case of your embryo. तो पहले एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट होता है, उसके बाद ये आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है. सी रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये जो टोटल डिविजनल स्टेजेस आप लोग देख रहे हो, यू आर लुकिंग एट दैट डिविजनल स्टेज ऑफ दिस सिंगल सेल कॉल्ड एज जाइगोट. Do not consider anything else. यही जाइगोट है. This one is the zygote which is dividing in such a manner to form the seed or form the embryo. ठीक है, तो ये हो गया आपका embryonic development. That is basically mentioned here. Embryo is a diploid cell developing from zygote. It starts to develop at the micropylar end. तो कहाँ से start होता है आपका embryonic development? At the micropylar end. ठीक है. Development of the zygote to form embryo starts only after the endosperm formation has taken place. See, this is what I was telling you. पहले मैं यही चीज आपको बता रहा था. Zygote to form embryo starts only after the endosperm formation has started. This is because the endosperm provides nutrition to the developing embryo. Embryo को वो nutrition provide करेगा. Stages of embryonic development are same in both monocots and dicots. The embryogeny refers to the stage of embryo development. Embryo development starts with the fertilized egg zygote, then passes through the 2-cell stage, then it moves on to the 8-cell stage, that is a globular stage, then the heart-shaped stage, then the torpedo stage, and finally the mature embryo. तो फाइनली ये एक मैच्योर एम्ब्रियो में डेवलप करता है, जिसके स्टेजेस हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया इन द प्रीवियस स्लाइड. वी हैव डिस्कस्ड इट इन द प्रीवियस स्लाइड. So students, this is all about the embryonic development that takes place, endospermic development and embryonic development of the post-fertilization events. In the next class, we will move on to the next two post-fertilization events, that is the development of seed and the development of fruit.
Thank you everyone.